Hello, 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 and welcome back to another class of our amazing course that we just started. And we have had a class on Indian polity and had a brief introduction about the course itself. So, as you all know, this is Jivitesh Saharan, and bringing you today is Indian geography. We'll have a brief discussion about Indian geography. We'll discuss about the physiographic structure of India. We'll especially focus on the Himalayas and some important places and the structure of Himalaya that you need to know. So, without any further ado, let's get started with the journey today. So, as you all know, this is a complete course for CDS preparation. I'll cover everything from this very first step to the last step that you need to take to become an officer in the Indian Defense Forces. So, what about the pros of this course? This is a 100% free course. This course will be bilingual. I'll try to be bilingual. कोशिश करूँगा हिंदी में बोला जाए, थोड़ा कोशिश करूँगा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा 70% इंग्लिश में भी रहे. But the cons, my handwriting. Anyways, you'll have to suffer. I also suffer. Can't be helped. So, today, as I told you, we'll be discussing about Indian geography. So, मेरा प्यारा भारत एरिया है 32 million, not 32 million, 32 lakhs, 87,263 square kilometers. And जैसा कि आप सब जानते हैं, we are the second most populous country behind China, and we are the 7th largest country in terms of land size, the area. So, on the globe itself, in terms of the land mass, availability of land mass, India occupies 2.4% of the total world's area. And in terms of its positioning, it lies in the northern hemisphere, as you all know, north and east of the Greenwich Meridian, timeline, and the equator. So India, in terms of the global positioning, India is in the northeast. Okay, so as India lies in the northern hemisphere, its latitude is 8 degree 4 minutes north to 37 degrees 6 minute north, parallel of latitudes. And in terms of longitude, it is 68 degrees 7 minute east to 97 degree 25 minutes east, meridians of the longitudes. So this is the mainland India. So this 8 degree 4 minute north, as you can see, this is 8 degree 4 minute north is the mainland India. In terms of the India as a whole, तो अंडमान निकोबार का जो निकोबार का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, that is approximately 6 degree 45 minutes north. So remember as you may. So just don't be infatuated by the terms, by the numbers. Figures are not that important. You might think, okay, these figures have been asked in exams, but ये सोचिए कि एग्जाम्स में अगर फिगर्स पूछी जाती हैं तो 100 में से एक सवाल होता है. डोंट गेट स्टक बाय दैट वन क्वेश्चन. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स इज फार इजियर एंड विल फेच यू मार्क्स. इट इज माय गारंटी. फैक्ट्स फिगर्स याद करने में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए एक हद से ज़्यादा. जो ज़रूरी होंगे, आई विल टेल यू, रिमेंबर दोज फैक्ट्स एंड यू विल बी गुड टू गो. ओके, सो एनीवेज, this is an old map. I've taken this from NCRT, and so thus the positioning of union territories and everything, the demarcation of boundaries of union territories is incorrect. So I just corrected a little. As we all know that these union territories have all been combined, and the capital being now Daman. All right. So guys, as you all know, I've shown you here as well that the extent of India is from 8 degree north to 37 degrees north. This is almost like 30 degrees in terms of latitudes, and in terms of longitude, India lies from 68 degrees to 97 degrees. That is almost 30 degree years as well. So इसका मतलब इंडिया 30 डिग्री इधर से इधर और 30 डिग्री इधर से इधर जब इंडिया का एक्सटेंट है, तो इसका मतलब लगभग जो इंडिया का ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है इक्वल होना चाहिए. ऐसा ही, बट ऐसा नहीं है. द एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट is approximately 2900 kilometers, or maybe it's like 2930 something. Okay,
And the extent of India from Kashmir to Kanyakumari, from north to south, is 3200 something like plus kilometers. So as you can see, there is this gap of 300 kilometers. 300 किलोमीटर का जो ये difference है, ये क्यों आ रहा है? You need to understand this. So this difference arises because ये जैसा कि आप मैप फ्लैट सरफेस पे देख रहे थे, बट अर्थ इज नॉट अ फ्लैट सरफेस, इट्स इन द शेप ऑफ अ स्फेयर. तो स्फेरिकल शेप्स की वजह से, जो जैसा कि हमने ऊपर वर्ड भी यूज किया था, इंडिया लाइज दिस टू दिस डिग्री पैरेलल and latitudes, but meridians of longitudes. So latitudes are parallel, not exactly parallel, but parallel in sense that this point and this point will have the same distance x, and this point and this point will have the same difference x. So कोई भी latitude की दो वैल्यूज के बीच में हमेशा डिफरेंस पूरी अर्थ पे सेम रहेगा, कहीं पे भी हो. Whereas longitudes के केस में ये इक्वेटर है, ठीक है. longitudes के केस में ये इक्वेटर के ऊपर यदि यहां पे हम एक लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस निकालते हैं, सो दे से दैट इज एक्स, तो वही दो लॉन्गिट्यूड्स जब ये ऊपर जाके दे ऑल मीट एट द पोल्स, तो यहां पे दिस इज एक्स बाई 2 से हाफ रह गया, या फिर से हेयर समथिंग एक्स माइनस वाई % ऑफ दैट. सो जो ये डिफरेंस है, ये डिस्टेंस जो है आप क्लियरली देख सकते हैं कम होता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया मैक्सिमम इक्वेटर पे. सो ड्यू टू दिस फैक्ट, ड्यू टू द फैक्ट दैट अर्थ इज इन शेप ऑफ अ स्फीयर, जो ये डिफरेंस है 30 डिग्रीज का ईस्ट टू वेस्ट और 30 डिग्रीज का नॉर्थ टू साउथ, इस डिफरेंस के एग्जैक्टली 30 डिग्रीज रहते हुए भी, जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज सेम रहते हुए भी, डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस डिफरेंस है. ओके, लेट्स मूव ऑन. लेट्स टॉक अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लोकेशन. तो मेरा प्यारा भारत का जो क्लेम है सी वाटर पे, जो उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट है, वो सिर्फ भारत का ही नहीं, हर एक देश का, दुनिया का, दैट इज टू 12 नॉटिकल माइल्स. टेरिटोरियल वाटर्स पे 12 नॉटिकल माइल्स. एक नॉर्मल माइल में, जैसा कि आप सब जानते हैं, 1.6 किलोमीटर्स होते हैं, बट एक नॉटिकल माइल इज 1.8 किलोमीटर्स. भाई ये पहले ये शिप विप चलती होंगी अंग्रेजों के टाइम में, ये कुछ 14th सेंचुरी, अंग्रेजों का टाइम तो नहीं कहूंगा, उस टाइम, तो उस टाइम they probably were not able to properly gauge the distance or something. I don't know exactly the stories, but I think I've read it somewhere. So ये जो nautical mile है थोड़ा सा normal mile से ज़्यादा है. खैर, और दूसरा जो आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, वो है 200 nautical miles. That is the exclusive economic zone of India. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि जो 200 नॉटिकल माइल्स के दायरे में इंडिया के कोई भी रिसोर्स है, तो उसका एक्सप्लोटेशन का मतलब एक्सप्लोटेशन एज इन लाइक वी कैन एक्सप्लोर दैट, वी कैन यूज दोज रिसोर्सेज बाय आवरसेल्व्स. तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. उस जोन में हम दूसरे शिप्स जो जा रही हैं, जो नेवल वेसल्स या फिर जो दूसरी कार्गो शिप्स वगैरह जा रही हैं, उनके ऊपर हमको रोक नहीं लगा सकते हैं. दे कैन जस्ट कंप्लीटली इजीली पास थ्रू दैट जोन. बट हम उस जोन में अपने कानूनों को नहीं मनवा सकते हैं, परंतु वी कैन लाइक एक्सप्लॉइट दोज एरियाज. ओके, मूविंग ऑन. इंडिया हैज अकाउंटेड टू 6100 kilometers of mainland coastline, and total including island is 7516 kilometers. ये आपको फ्रैक्टल्स, किसी ने नाम सुना हो? फ्रैक्टल्स जैसे स्नोफ्लेक होती है, एक फ्रैक्टल होता है. तो लाइक कोस्टलाइन इज अ, ओके, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टेंस. कोस्टलाइन इज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्टल इटसेल्फ. आप एग्जैक्टली कभी भी ये नहीं बता सकते कि कोस्टलाइन इतनी है. पानी भी आपने देखा होगा ऊपर नीचे होता रहता है. कोस्टलाइन की शेप जिस हिसाब से होती है, यू कांट एग्जैक्टली, बट देयर आर सम नॉर्म्स एस्टैब्लिश्ड, ग्रिड पैटर्न के बेस पे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज 6100 किलोमीटर्स इंडियन मेनलैंड की. आप इतना याद रख सकते हैं, लगभग 6000 किलोमीटर आपको याद रहे तो बेहतर रहेगा. Okay, anyways, this is not necessary. You don't have to remember all these things. India's total landmass is divided into 4 main geographical and geological features. And the 4 main regions are the northern mountains, the Himalayas, and the Purvanchal mountains. The northern plains, we'll discuss about how the plains are formed, and a lot of other economic aspects, and the other
aspects of the plains later, the peninsular region and the coastal plains. And we'll discuss how coastal plains are different from the northern plains. And we'll discuss all these things later in the classes. So now we'll go step by step. We'll discuss about the features of India. And we'll start with the northern mountains. The northern mountains being the Himalayas, the mighty Himalayas. कविता भी आप सबने सुनी होगी. उस कविता का एक अंश है सिरमौर हिमालय है, भारत का सिरमौर बोला जाता है हिमालय को. तो देर आर फैक्टर्स वाई हिमालय इज कॉल्ड द सिरमौर ऑफ इंडिया. एंड इंडिया का जो क्लाइमेट है आज के टाइम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि से दिस इज इंडिया, ओके. एंड सो वाई इंडिया, इवन दो ये इंडिया का एरिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में है, and this lies in subtropical and this lies in temperate. Why, even though इंडिया का काफी बड़ा हिस्सा टेम्परेट रीजन में लाया करता है, फिर भी जो इंडिया का क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है, या फिर एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है इंडिया का? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक हिमालयाज की प्रेजेंस का है. जो कोल्ड वेव्स, जो कोल्ड विंड्स जो है नॉर्थ से आती हैं वो नहीं आ पाती हैं. एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स, हाउ हिमालयाज इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ इंडिया. लाइक द इमेंस 140 करोड़ लोगों की जिंदगी कैसे प्रभावित होती है, सिर्फ हिमालय के रीजन्स में रहने वालों की नहीं, सिर्फ प्लेन्स वालों की नहीं, डाउन साउथ तक हिमालयाज का इम्पैक्ट है. विल डिस्कस ऑल अबाउट दीज थिंग्स इन द अपकमिंग क्लासेस एंड दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग. सो आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, if you find the videos interesting, if you're finding this class interesting, smash the like button, smash it. Comment down below after the class what you liked about the class, what could have been better in the class, and if you disliked it, just tell me that you didn't like it, it was horrible. I'm fine with it, I'll try to improve myself. And subscribe so that you can attend all the upcoming classes. You will get a notification of all the classes. Hit that notification bell icon as well. And yeah, so let's move on. Let's talk about the northern mountain complex. Let's talk about the Himalayas. Let's talk about the interesting juicy stuff. Himalayas, as you all know, these are the young mountain. Why these are called the young mountain ranges? आपने सुना भी होगा शायद, हिमालयाज के अभी नया सर्वे किया था चाइना ने, तो दे हैव फाउंड दैट हिमालयाज की कुछ हाइट बढ़ी है एंड हिमालयाज की हाइट लगातार राइज हो रही है. And there is this constant tectonic movement that is going on. We'll discuss about these things. This is the very first class, so we'll discuss about the upper topics. We'll have a taste of the subject and we'll go in depth of every single topic later. So Himalayas young mountain hai, young fold mountains hai, and so they separate the Indian subcontinent from the Tibetan plateau. As you all know, ऊपर Tibetan plateau है, उसके ऊपर China है, पीछे पामीर की नोट है, and all these things we'll discuss in the upcoming classes. And it is source of two of the world's major river systems, Indus Basin and Ganga Brahmaputra Basin. आप जानते होंगे कैलाश पर्वत रेंजेस के आसपास से, मानसरोवर लेक के आसपास से मैं तो कहूँगा 4 बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं. 3 जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा. गंगा जबकि काफी नीचे से निकलती है, बट सतलुज एंड ऑल, सतलुज रेदर काफी क्लोज उस एरिया से निकल के आती है. तो दीज 3 रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड दे विल इमर्ज फ्रॉम दैट वेरी क्लोज रीजन. एनीवेज, सो what about Himalayas? The Himalayas divide in the range can be, the Himalayan range can be divided into the Himalayas, the mighty Himalayas. Him baraf alya ghar, baraf ka ghar. So the uppermost regions, the central axis length of Himalayas is about 2400 kilometers. यहाँ से यहाँ तक हिमालयाज की, ये नॉर्थ के अंदर आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, और राइट के अंदर एक्सट्रीम राइट जहाँ पे सिंटेक्सियल बैंड है, जिसके साथ से ब्रह्मपुत्र घूमती है, इंडिया में एंटर करती है, सोंगपो नदी चाइना से, वो है नामचा बारवा. एंड इफ आई हैव द मैप हियर राइट, सो यहाँ पे आपका नंगा पर्वत पड़ता है. This B, and here it is Namcha Barba. So the Great Himalayas run like this, something like this. इधर इतने ऊपर तो नहीं है, but
They run like this. Okay. Okay. Right. 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 And this this mighty range, even though it's not the longest in the world, but it's quite long. You can see, as you can see, like from one end of India almost to this the other end of India, they run, and that's why they are one of the mightiest mountains. And it is estimated, as we discussed earlier as well, it is estimated that Indian plate is still moving northward with a rate of 5 centimeters per year. 5 सेंटीमीटर से अर्थ के ऊपर जो ये प्लेट है, इंडियन प्लेट, और ये जहाँ पे तिब्बतन जो प्लेट्यू है, इसके ऊपर यहाँ पे जाके टकरा रही है यार, ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर की जो मूवमेंट है, सुनने में 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा लगता है, बट 5 सेंटीमीटर पर ईयर इज जाइनॉर्मस व्हेन यू कंसिडर कि कितना बड़ा मास, अर्थ मास मूव हो रहा है, कितना ज्यादा बड़ा लैंड मास मूव हो रहा है. एनीवेज, सो दिस इज नॉट अ सिंगल रेंज बट सीरीज ऑफ माउंटेन्स. आप जानते होंगे ऊपर यहाँ पे पामीर की नोट है, यहाँ पे ये सारे कुनलुन चान तेंजन माउंटेन्स हैं, ये अपने सुलेमान रेंजेस हैं, यहाँ पे हिमालयाज है, ओके, एंड अराकनियोमा, पेंगनियोमा, ऑल दीज रेंजेस आर देयर. विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज रेंजेस. देन द नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ हिमालयाज इज ग्रेट हिमालयाज. सबसे ऊपर जो सबसे मेन हिमालयाज हैं ग्रेट हिमालयाज हैं, उसके बाद बोलते हैं मिडिल और लेसर हिमालयाज हैं, उसके नीचे सबसे नीचे शिवालिक आउटर हिमालयाज जिनको बोलते हैं. Okay, these are the lesser Himalayas and these are the Shivaliks. Shivaliks आगे जाके मर्ज हो जाते हैं यहाँ पे. These are the Shivaliks जो बीच में lesser Himalayas के साथ आगे जाके मर्ज हो जाते हैं. Anyways, so there is this some brief differences that I've pointed out. The Great Himalayas, so highest mountain ranges, the biggest mountains, the mightiest of mountains lie in the Great Himalayas. Lesser Himalayas, shorter than Great Himalayas. साउथ ऑफ हिमाद्री, द हिमालयाज नॉर्थ की तरफ नहीं है, साउथ की तरफ है, याद रखना है. इंडिया के अंदर की तरफ, इंडिया की तरफ जो लेसर हिमालयाज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और शिवालिक्स जो सबसे छोटी रेंज है वो सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज की. द एवरेज हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयाज इज 6000 मीटर्स. मतलब यकीन मानिए 6000 मीटर एवरेज एलिवेशन है. 6000 मीटर, लाइक वहां पे 6000 मीटर को क्लाइंब करने के लिए आपको स्पेशल एक्लेमेटाइज करना पड़ता है. एक्लेमेटाइज करके भी लॉट ऑफ पीपल कांट सर्वाइव. एनीवेज, द हाइट ऑफ ग्रेट द लेसर हिमालयाज इज अबाउट 3000 meters, एंड ऑफ द लेसर हिमालयाज इज लाइक वेरी मीगर. सो दे ऑल इवेंचुअली मर्ज टू द लेसर हिमालयाज, नेपाल और ईस्टर्न हिमालयाज की साइड में जाके. मेजर पीक्स आर नंगा पर्वत, K2, एवरेस्ट, all these the mightiest of the peaks, Nanda Devi and all these other peaks are in the Great Himalayas. जितने भी बड़े बड़े पहाड़ों के नाम अपने हिमालयस के सुने हैं वो सभी ग्रेट हिमालयस के ही रेंज में एग्जिस्ट करते हैं. जितने भी आपने टूरिस्ट स्पॉट के नाम सुने हो, हेल्थ रिजॉर्ट्स के नाम सुने हो, बढ़िया बढ़िया हिल स्टेशन के नाम सुने हो जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, दे आर यूजुअली इन द लेसर हिमालयस. लेसर हिमालयस आर लाइक एट अमेजिंग एलिवेशन. 3000 एवरेज एलिवेशन इज अमेजिंग, बट they are what they are, and they're really famous for health resorts and all. People from all across the world come to India to enjoy the beauty, the scenic beauties of lesser Himalayas. And the Shivaliks are famous for their dunes. देहरादून का नाम है, आपने सुना होगा. dunes जो होते हैं वो elongated flat valleys होती हैं. देहरादून में जैसा आपने सुना होगा कि 3 तरफ पहाड़ हैं, बीच में वो plains एरिया है, फ्लैट एरिया है. ऐसे वैली पहाड़ के दो पहाड़ों के जुड़े होने से नहीं है, वो elongated flat valleys होती हैं. इन क्यों बनती है, कैसे बनती है, हम सब पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में. And जितना जरूरी होगा उतना. I won't teach you beyond what is required. So these differences are required to understand what Himalayas are, and that's why we've discussed some important mountain passes. Let's just go through the passes. We'll discuss these passes in detail in the upcoming class. बनिहाल पास, जैसे ही यदि आप जम्मू से ऊपर कश्मीर की तरफ यहाँ जाते हैं तो यहाँ बनिहाल पास आपको मिलता है श्रीनगर की तरफ जाते हुए. जिपला पास है, काराकोरम पास है, माना पास है, नाथुला पास है, रोहतांग पास है. रोहतांग पास इज वेरी इंपॉर्टेंट पास. इसके साथ जो रिवर एसोसिएटेड आप प्लीज याद रखिए. ये बड़ा लाचला पास का भी आपने नाम जरूर सुना होगा. इसके साथ भी एसोसिएटेड जो रिवर है, आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि रोहतांग पास से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है. Okay, now moving on to the word of the day and concluding the class with this word of the day, as always. So today's word of the day from the book Word Power Made Easy, which I always recommend to every single body. This is misogyny. Last time we did the word misanthrope, and that was, tell me if you remember. So misogyny is comprised of mis,
and gynae. So this means woman, and this means fearful of. So that woman, so misogynist is somebody who thinks that women are no good, who hates women. So the root word is gynae here and mis. So again, similarly as we remember the word misanthrope, we can remember the word misogyny. Miss is like कुछ काम miss कर दिया हमने. Gynae is woman, so woman से मिलना miss कर दिया बचपन से, तो we will be fearful of women कि ये क्या है क्या नहीं है. So you can remember the word in this sort of way, and this is the word of the day, and that is it for the day, and we'll conclude it right here. Thank you so much. Like the video if you liked it, subscribe if you want more, and comment down below your reviews of the class today. Thank you. See you in the next one.